was killed, when was Shah Jahan was killed, when Mughals came in, when Britishers came in. We cannot understand or we cannot learn those dates. But on the other hand, we can memorize the whole 3 hours movie of Padmavat. We can remember every single dialogue from movies like Sholay, even though they were 3 hours long and we might have not seen in last 10 years, but we will still remember those dialogues. The main reason for that is that our mind process audiovisual. I will. In the most easiest way. बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, वो फोटोज को जो होता है, जो हमारी जितनी भी फोटोज और वीडियोस होती हैं, उसको सबसे जल्दी प्रोसेस करता है, उसको सबसे जल्दी याद रखता है, उसको सबसे जल्दी समझता है. हम जब भी कोई चीज ऐसी देखते हैं जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है पहले किसी टाइम पे, या हमने कोई ऐसी चीज सुनते हैं, वो कुछ भी एक बहुत छोटा सा गाना हो सकता है, बहुत छोटी सी ट्यून हो सकती है, कोई भी छोटी सी जिंगल हो सकती है, मे बी आपने बहुत टाइम पहले वो एक होते ना, जैसे आईफोन का जो रिंगटोन है, काफी लोगों ने बहुत टाइम ऐसे यूज आईफोन ना करते, बट उनको पता है कि वो आईफोन की टोन है, या वो नोकिया की टोन है, या वो सैमसंग की टोन है, बिकॉज हमारे माइंड की सबसे बड़ी खासियत ये है, 2 खासियत होती है. पहला ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो सबसे ज्यादा लेजी होता है. आपने काफी टाइम सुना होगा कि एक इंसान का दिमाग से मुश्किल 4 से 5% उसकी जो काबिलियत होता है उसका यूज करता है. इसका रीजन ये है कि हमारा माइंड जो वर्क करता है वो वर्क करता है सबसे आसान काम को आसानी से करने का. तो उसके लिए ये वर्ड्स याद करना, लाइनें याद करना, स्पेशली उन चीजों के बारे में जो हमें हमारे अपने अपने आप को मन से लगता है कि आगे जाके कुछ यूज होगा नहीं होगा, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं. बट ऑन दी अदर हैंड अब वही हम उधर से हम देखें कि मूवीज वगैरह देखते हैं, गाने सुनते हैं, कुछ करते हैं, वो हमें बड़ी जल्दी याद हो जाता है. हमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती. आप 2-3 बार 3 बार 4 बार एक गाना सुनते हो, 5वीं बार आप गाने सुन चुके होते हो. I will do one thing. I will say in both the languages. So first I will say in English, and after that I will repeat in English, so it could be understandable for both sides. Yes, sir. So going on with the process of what fashion photography is as a whole, of what fashion photography means when we talk about a genre of fashion in terms of photography. Because if we see in India, whenever we talk about photography to someone in any city, any place, to any person, 2 things comes to mind quickly, immediately to their mind. First is wedding, another is passport size. हम जब भी फोटोग्राफी की बात करते हैं इंडिया में, हम किसी से भी बोलते हैं कि फोटोग्राफी क्या होता है, तो उनके दिमाग में 2 चीजें आती हैं, या तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफर या फिर वेडिंग वाला पप्पू फोटोग्राफर. इंडिया वालों ने एक तरह से हम स्टीरियोटाइप बना रखा है कि फोटोग्राफर्स का मतलब होता है कि वेडिंग में जो बंदा फोटो क्लिक कर रहा है, जो वेडिंग में जो फोटोग्राफर काम कर रहा है, वो ही एक फोटोग्राफर है. हम जब भी किसी को बोलते हैं कि हम फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या स्ट्रीट स्टाइल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये क्या होता है, या फिर वो कौन करते हैं, उससे क्या होगा, इसमें पैसा छोड़िए, उसमें कोई आगे फ्यूचर छोड़िए. सबसे बड़ा या सबसे मेजर जो एक differentiation that I have seen personally in my life was when I opted to start with travel photography. When we talk about travel photography, the first thing that comes to our parents' mind or someone's elder's mind from our own generation is ये जवानी है दीवानी का बनी. If we talk about I want to become a travel photographer, they immediately goes with oh तो मैं बनी बनना है आगे जाके. If we talk about wildlife photographer, they immediately go for तुम्हें तो फ्रांक कुरैशी बनना है आगे जाके. But they don't understand कि वो जो कैरेक्टर्स दिखाए थे वो इसलिए नहीं दिखाए कि वो कुछ अलग था या नोखा था. वो कैरेक्टर्स वो दिखाए थे जो ऑलरेडी काफी सालों से नहीं बल्कि 100 सालों से हो रहा है. I don't know how many here have actually studied about photography on a theoretical aspect and gone in depth with the history of photography or how camera was created. But whenever you study about photography from a theoretical perspective, when you go towards photography from the part of history, the camera has been around in our
universe since late 18th century. कैमरे का आविष्कार हुआ था 18वीं सदी में हो चुका था. यूरोप में कैमरा बन चुका था और दुनिया की सबसे पहली जो फोटो थी वो 1880 तक आ चुकी थी. The first photo which we can see from a working camera was back in 1880. 1920 तक we had cameras which was portable enough, which was carryable enough and working enough that we could do photography. 1920 में कोडेक ने कैमरा निकाल चुका था जो कि आप ले भी सकते थे, खरीद सकते थे, यूज कर सकते थे, और कोई ऐसा कोई करोड़ों का लाखों कैमरा नहीं था, बल्कि वो $1 का कैमरा. इवन दो उस टाइम के $1 का मतलब आज के जमाने में $800 के आसपास बैठ जाता है, बट स्टिल उस टाइम पे एक ऐसा कैमरा एग्जिस्ट करता था. उस टाइम पे ऐसा कैमरा वर्क होता था जो कि फोटो क्लिक करता था, फिल्म कैमरा. और व्हेन हम जब बात करते हैं फोटोग्राफी के मूवमेंट्स की, व्हेन बात करते हैं फोटोज की, तो ये ऐसा तो है नहीं कि हमने पुरानी फोटोज नहीं देखी. हमने 1947 से पहले देश आजाद जब हुआ था उससे पहले हमने फोटोज देखी है. हमने विंस्टन चर्चिल की फोटोज देखी है, महात्मा गांधी की फोटो देखी है, जवाहरलाल नेहरू की फोटो देखी है. और उसके बाद भी जब नया नया बॉलीवुड बना था, सब कुछ बना था, तो हमने राज कपूर से लेकर पृथ्वीराज कपूर तक भी देखे. सबको ये तो पता ही होगा कि सबसे पहली जो वॉइस मूवी जो बनी थी वो 1936 में बनी थी. तो जो फिल्म मेकिंग है या फोटोग्राफी है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो भी 5-10 साल में आया और अचानक से लोगों ने पकड़ा और लोग स्टार्ट हो गए. फोटोग्राफी कुछ ऐसा है जो हम पिछले 100 साल से देखते आ रहे हैं. इसका यही रीजन है कि वेडिंग फोटोग्राफी इंडिया में $1 बिलियन की इंडस्ट्री है और फैशन की जो इंडस्ट्री है इंटरनेशनली ट्रिलियंस में है. फैशन इज वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट इंडस्ट्री. What I was saying is that when we talk about photography as a whole, it is not something which originated in just in last 10 years or 15 years, even in 20 years. It have been from last 100 years. We have seen photos of Winston Churchill, we have seen photos of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, even Prithviraj Kapoor, Raj Kapoor, and all those other kinds of people back from 1940s and 1950s. So whenever we talk about photography, it is not something which came in instant and we started doing it just because we like it. What changed was that before that, if we need to use a camera, if we used to do photography, we had to purchase a proper professional camera or a film camera. We had to click the photos, get the film developed, get it printed, and then we can use it. But since the inception of mobiles, since the invention of camera mobiles, we have been using it on just on the mobile, which is something we carry on every day. And since then, photography has become from an प्रोफेशन टू एन हॉबी. जब से कैमरा का आविष्कार हुआ है मोबाइल के तौर पे, जब से मोबाइल के अंदर कैमरा जाना स्टार्ट हुए हैं, जब से 2004-2005 के बाद नोकिया, सैमसंग जैसे मोबाइलों ने अपने मोबाइल के साथ कैमरा देना स्टार्ट किया है, उसके बाद से जो फोटोग्राफी है वो एक प्रोफेशन जो एक बहुत बड़ा खर्चे वाला काम से हटके अब एक ऐसी चीज हो गई है जो हर कोई कर सकता है जब उसको मन करे. मोबाइल एक ऐसी चीज होती है कि आप खड़े होते हो, सुबह उठते हो, जेब में डालते हो, चले जाते हो, 10-15-100-200-300 जितनी फोटो क्लिक करनी करते हो, शाम को आते हो, देखते हो, खुश होते हो. अब ऐसा नहीं रह गया कि आप कैमरा उठाओगे, रील डालोगे, फोटो क्लिक करोगे, उसको फिर वॉश करवाओगे, प्रिंट करवाओगे, फिर आपको 10 दिन लगा के फोटो देखोगे, फोटो खराब आई तो पता नहीं, सही आई तो पता नहीं. टुडेज वर्ल्ड, one of the fashion photographers and a communication once said, today's world works in 3 steps: pick it out, click it, and done with it. जेब से मोबाइल निकालो, क्लिक करो, खत्म करो. This is today's truth of photography. And in that truth, the biggest is fashion. अगर हम जब भी बात करते हैं सोशल मीडिया में, तो सबसे पहले जो आगे आता है इंस्टाग्राम पे या किसी भी चीज पे, वो आता है फैशन. हम जब भी कोई बात करते हैं एक फोटोग्राफी वर्ल्ड की, तो सबसे बड़ी बात आती है फैशन. So let's talk about how fashion photography is different from portrait photography or any other genre of photography and why people usually confuse one with other. बात करते हैं कि फैशन फोटोग्राफी एक से अलग कैसे होती है और हम कैसे एक छोटी सी एक अलग जॉनरे को एक बिल्कुल ही अलग जॉनरे से कंफ्यूज करते हैं. Anushka, do I have the share screen ability here? Yes, sir. You can see in the green. Yeah. Yeah. Thank you.
Just a second, guys. Yeah. So if you see these two cover pages, most of them was clicked for Vogue. Vogue is one of the world's biggest fashion magazine. It usually works with the top 1% of the fashion industry. It caters to around the world, from Vogue India to Vogue America to Vogue UK to Vogue Brazil. It caters in 115 countries. वॉग जो है दुनिया की सबसे बड़ी फैशन मैगजीन मानी जाती है। ये जो मैगजीन है, इनका जो पब्लिकेशन हाउस, इसका नाम है कॉन्डे नेस्ट इंडिया, सॉरी कॉन्डे नेस्ट पब्लिकेशन हाउस। उसमें उनका कॉन्डे नेस्ट इंडिया अपना खुद का पब्लिकेशन हाउस है। वो दुनिया सबसे बड़ा माना जाता है, जो 115 देशों में अपनी मैगजीन्स को बांटता है। और इसमें वर्क करने वाले जो लोग हैं वो माने जाते हैं कि दुनिया के फैशन इंडस्ट्री के टॉप जो लोग होते हैं वो इनके साथ वर्क करते हैं। So both of these covers were clicked by one of the most celebrated, one of the most aspired, one of the best fashion photographers of the world, Mario Testino. ये दोनों जो फोटोज क्लिक की गई हैं, जो सबसे बड़े, सबसे जाने पहचाने, सबसे इज्जतदार जिसको हम बात करते हैं फैशन फोटोग्राफर से क्लिक की गई, उनका नाम है मैरियो टेस्टिनो। स्पेन के एक फैशन फोटोग्राफर हैं जो फैशन इंडस्ट्री में काफी पिछले 30 सालों से हैं, जिन्होंने वॉक के साथ और काफी बड़े बड़े नामी लोगों के साथ काम किया है। और इनको माना जाता है कि इनकी कलाकारी फोटोग्राफी के मामलों में एक अपने में एक स्तंभ है। He is one of the milestone, one of the icon in the photography. We can call him kind of a Amitabh Bachchan in the fashion photography industry. So Kendall Jenner, one of the most celebrated supermodel, is on the left side. It was a part of Vogue's 10th anniversary of India. So Mario Testino came down to India and he worked with several artists, including Kendall Jenner, Ayushmann Khurrana, Vicky Kaushal, and others, to create a special 10th anniversary collector's edition. कुछ टाइम पहले 2017 में मैरियो टेस्टिनो इंडिया आए थे, जब उन्होंने काफी नामी हस्तियों के साथ वर्क किया था। कैंडल जेनर जो हम उसका कवर फोटो भी देख सकते हैं, इसके अलावा आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, राजकुमार राव, काफी लोगों से उन्होंने वर्क किया था। एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन बनाने के लिए, इनकी 10वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए वो को इंडिया में आए हुए। So this is what we call in terms of fashion photography, say the biggest achievement. If your photo is on the cover of Vogue, if your photo is the cover of GQ, if your photo is on the cover of Els, Harper Bazaar, it is considered to be an award in itself. It's considered to be a milestone in itself. अगर आपके फोटो किसी भी एक मैगजीन जैसे वोग हो सकती है, GQ, हार्पर बाजार, LA, कॉस्मोपॉलिटन जैसे कवर के ऊपर आ रही है, आपने किसी नामी हस्ती फोटो क्लिक करी और आपकी फोटो ऐसे कवर पे हुई है, तो माना जाता है कि आपने एक स्तंभ, एक आपने अचीवमेंट पाई है, जिसको एक अवार्ड से कम नहीं बोल सकते। Biggest question comes in our mind is what are they paid? What is the salary of a Vogue photographer? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इनकी कमाई कितनी है, सैलरी कितनी होती है, क्योंकि इंडिया में जब किसी को भी कुछ बोलते हैं तो ये पूछा जाता है कि तुम्हारे कमाओगे कितना, मिलेगा कितना। तो whenever we talk about Mario Testino, considering he's not contracted to only just one brand but several brands, he doesn't work as an employee but a freelance photographer. He earns anywhere around from $3 to $4 million. Mario Testino एक एम्प्लॉय नहीं है, वो एक फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं काफी ब्रांड्स के साथ। बिकॉज इतने बड़े नाम है, उनको किसी एक के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनको हायर करना है तो आप उनको पैसे देके बुला सकते हो। बोला जाता है कि वो एक शूट के 1 लाख से $3 लाख तक लेते हैं और उनकी सालाना इनकम $3 से $4 मिलियन बोली जाती है। ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड फैशन फोटोग्राफर्स ऑफ द वर्ल्ड। So these are two kind of fashion photos which usually a fashion photographer of any level clicks. First is what we call an outdoor fashion photography and another one is indoor photography. Both of them are majorly used for marketing, commercial work, branding, and most of them are completely opposite of each other. Fashion photography में दो तरह की फोटोग्राफी होती है। एक तो आपकी होती है आउटडोर फोटोग्राफी, आप जो बाहर लोकेशन पर जाके करते हो, और एक होते है इंडोर फोटोग्राफी जो स्टूडियो में करते हो। दोनों ही अपने में बहुत अलग हैं एक दूसरे से, और मोस्टली जो होते हैं दोनों किसी ब्रांड को, किसी चीज को बेचने के लिए, किसी चीज को कमर्शियलाइज करने के लिए, मार्केट करने के लिए
यूज किए जाते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट आउटडोर फोटोग्राफी फर्स्ट. So over on the left, you can see that this photo is not somewhat what we can say a normal photo, a simpler photo, what you would go and click outdoor with your friend, or you will like mind clicking. It is something which was pre-planned. It was something which was conceptualized and it was executed and it was delivered and it was printed. So the obviously the model in this photo is Rihanna, one of the biggest names of the music industry and the fashion industry. And the shoot is for Dior, which is also one of the biggest fashion brands. So when you see that there is a background, there is a whole outfit, there is a whole lighting structure, there is a whole aura, there is a whole idea behind it. And this was nothing done on the moment of the shoot. It was planned before months. There are months and months goes into planning this. जैसे आप देख सकते हैं कि इस फोटो के अंदर जब काम करते हैं लोग, तो ये कोई ऐसी फोटो नहीं है कि आप गए, आपने 2 लाइटें लगाई, आपने एक फ्रेंड को पकड़ा, कहीं अलग कोने में जाके क्लिक कर दी. हो सकता है कि आप ऐसी फोटो अचीव कर लें कुछ ट्राई के बाद, कुछ प्रैक्टिस के बाद, बट ऐसी फोटो क्लिक करने के लिए आपको महीने और महीने लगते हैं लोगों को प्लान करने के लिए. उनके आउटफिट से लेके एक एक चीज तक, उन्होंने कैसे खड़े होना है, उन्होंने क्या पोज करना है, कैसे लाइटिंग आएगी, क्या मेकअप होगा, उन्होंने क्या पहनना है, पीछे क्या है, आगे क्या, इवन तो कलर के ऊपर तक, इवन जो पैटर्न बना है कि पैटर्न कैसे दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बारीकियों तक से उनकी जो होती है, इसकी प्लानिंग जो है महीनों तक होती है. ये शूट यूजुअली जो होते हैं लाखों करोड़ों के होते हैं, तो इनमें कोई ऐसे मजाक की बात की तरह लेके जा नहीं सकते कि आप गए, क्लिक करिए, नहीं हुआ कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे. इनके लिए ये ऐसा काम है कि अगर उस दिन नहीं हुआ तो पूरा काम बर्बाद, ना आपको आगे पेमेंट मिलेगी, ना ही आपको आगे का काम. और ऑन द लाइट साइड, इट इज अ सिंपल स्टूडियो पोर्ट्रेट. Simple because if you have basic knowledge of studio, if you have basic knowledge of lights, if you have basic knowledge of strobes photography, and you are good enough, you are confident enough with your camera and with your lighting setup in the studio setup, you can very well deliver this product. जो हमारे राइट साइड में जो फोटो है वो स्टूडियो पोर्ट्रेट है. अगर आपने कैमरा चलाया है, आपको कैमरा की लाइटिंग, आपको स्टूडियो में वर्क करना है, व्हाइट बैकग्राउंड पे आता है, आपको पता है कि आपकी वो लाइट कैसे चलती है, आपने कैसे वर्क करना है, आप काफी टाइम उससे स्टूडियो से वर्क कर रहे हैं, तो ये फोटो निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा. मुश्किल क्या होगा कि फोटो ये ऐसे ही निकले. ये भी फोटो डियोर का ही है, मगर इसमें डिफरेंस क्या है, ये व्हाइट क्यों है पीछे, ये डिसाइड किया गया. इसके बाल व्हाइट है, मॉडल कौन है, आउटफिट कैसा है, ज्वेलरी क्या है, आउटफिट क्या है, ये सब प्लान्ड है. इस फोटो में और आगे जो फोटो दिखाऊंगा, दोनों फोटो में कहने को पोर्ट्रेट्स हैं, बट एक पोर्ट्रेट अलग है और एक पोर्ट्रेट अलग है. उसका रीजन क्या है कि ये जो पोर्ट्रेट है इसको हम फैशन के तौर से देखते हैं, दूसरा जो पोर्ट्रेट हम उसको सब पोर्ट्रेट के तौर से देखते हैं. तो मैं बात कर रहा हूं इनकी. अब ये जो फोटो है इसमें राइट साइड पे पोर्ट्रेट तो ये भी है. पोर्ट्रेट तो इसमें भी कुछ ना कुछ दिमाग इसमें भी लगा होगा कि भाई तुमने ये ज्वेलरी क्यों पहनी, तुमने ये आउट ड्रेस क्यों पहनी, तुम्हारे मेकअप ऐसा क्यों, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों, पोज कैसा क्यों. Even on the right side, this is also a portrait, this is also a headshot. There is also might have some kind of a production team's conceptualization, some kind of a stylist who would have said that I want this kind of outfit, I want this kind of a pose, I want this makeup, I want this necklace. But both of them are completely opposite. दोनों एक दूसरे से कतई ही अलग इसलिए हैं. सबसे बड़ा रीजन ये है उनका ग्लैमर, उनके पीछे की स्टोरी, उनके पीछे का रीजन. अगर मैं ये फोटो किसी को आके मैगजीन में दिखाता हूँ, इसमें दोनों फोटो में एक ही चीज हमें करनी है, दोनों में हमें दिखा रहे हैं आउटफिट. आउटफिट इसमें चाहे दिख रहा हो, मेरी पहली नजर उसकी आंखों पे जाएगी. इस फोटो में आंखें इसमें भी दिख रही है, शक्ल इसमें भी दिख रही है, मेरी सबसे पहली नजर जा रही है उसके कपड़ों पे. इसमें और इसमें सबसे बड़ा रीजन, और फैशन में और नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सबसे बड़ा रीजन जो है, नॉर्मल फोटोग्राफी जो होती है मॉडल को देखते हुए होती है. उसमें हमारा मेन फोकस मॉडल होती है, उसमें हमारा मेन जो एक होता है वो मॉडल पे होता है.
The major difference in between this photo and this photo is that whenever we talk about portrait photography, whenever we talk about lifestyle photography, our most major focus is on the model, but not what they are wearing, not what they are after, and what are around them. If you see in these two photos and in these two photos, our first focus goes over onto the bag, over to the accessory, over to the dress, but not their faces. The faces are secondary for us. But in these photos, our only and only focus goes toward the eyes, goes toward the face. What reflects, what is in focus is the face, but not the surrounding, not the outfit, not the whole arena. This is the major difference between fashion photography and portrait photography. If your photo, if you go and click a photo, and if you're clicking a photo for a fashion brand, if your focus is on a fashion brand, if your focus is on the clothing or accessories or the product they are using, they are wearing, then the focus should be on that, not on the model. That face is just for you, it is just a mannequin. अगर आप कल को जाके फोटो क्लिक करते हो किसी ब्रांड के लिए, उसमें कपड़े हो सकते हैं, चश्मा हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, घड़ी हो सकती है, उस शक्ल, उस चीज के पीछे चाहे जितना भी बड़ा फेस हो, चाहे रणवीर सिंह हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, पहली नजर हमारी चीज पे होनी चाहिए. अगर हमारी चीज पे नजर नहीं जाके उन पे जा रही है तो वो फोटो गलत है. और चाहे पीछे इतना बड़ा फेस हो, हमारी तब भी नजर चीज पे ही जा रही है तो फोटो सही है. बिकॉज हमें जो बेचना है वो बंदे को, इंसान को नहीं बेचना. हमें जो बेचना है वो है वो उन्होंने पहना हुआ है. हमारा जो फैशन ब्रांड है उसको जो बेचना है उसको बेचना है जो उसने पहना हुआ है, उसके कपड़े बेचने हैं हमने. पीछे मॉडल जो है हमारे लिए बस एक पुतला है. So these are two of the biggest names. One which I mentioned before, which is Mario Testino. This is Bill Cunningham. Bill Cunningham was a British street photographer. I will explain what street photography and street fashion photographers and fashion event photography and what other kind of a category goes into fashion photography. He was recognized as one of the best fashion photographers and fashion show photographers. He passed away back in 2012. He has BBC documentary on him available on YouTube, and he is considered one of the legends. मैंने जैसे पहले बताया था, इनके बारे में बात की थी, मैरो टेस्टिनो है, जिसमें आप पहले आपको वो के मैगजीन के कवर्स दिखाए थे. और ये जो है ये है बिल कनिंघम. ये ब्रिटेन के एक फोटोग्राफर थे जिनकी 2012 में मृत्यु हो गई थी. माना जाता है कि ये स्ट्रीट फैशन फोटोग्राफी और फैशन शोज फोटोग्राफी में सबसे बड़े लेजेंड है. इनकी फोटोज के लिए लोग करोड़ों देने के लिए तैयार होते थे. इनको बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी. और ये दो फेसेस हैं जो हमने इंडिया में फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है या देखा या सुना भी है. तो ये दो ऐसी शक्लें हैं जो हमें सबको ऑलमोस्ट पता होती है. लेफ्ट साइड पे दबू रत्नानी, राइट साइड पे ग्वेंकर. In India, if we talk about fashion photography, we talk about the photography as a whole, and if the first two names which comes to the mind or to the lips of an Indian is Dabu Ratnani and Praveen Bhatt. Obviously, Dabu Ratnani and both of them has made their name in the industry as one of the leading fashion photographers, especially working regularly with Bollywood and the high top paying clients, regularly working with the magazines, regularly working for them. Dabu Ratnani's own fashion calendar or Bollywood calendar is something which is since early 19, it has always been some kind of a big trophy for Bollywood industry. So these are the two faces when we talk about the Indian photography scenario or Indian photography thing. So बात आती है कि फैशन फोटोग्राफी में हर बंदा सब यही तो नहीं हो सकता है कि कैमरा लेके जाए और हमने कैमरे में स्टूडियो में फोटो लेके आ रहा है. हर बंदा ये भी नहीं कर सकता कि फैशन फोटोग्राफी में कि हमने एक कपड़े को चीज को बेच रहे हैं या कुछ ये करना है अलग. उसमें ऑप्शंस क्या हैं. अगर हर बंदा एक ही चीज करने लग गया तो फिर अगर एक जगह पे 10 लोग आए हैं, 10 के 10 लोग अगर एक ही काम करते हैं तो अलग लोगों फिर उसमें अलग क्या हुआ. उसमें फैशन फोटोग्राफी में इतना ज्यादा कंपटीशन क्यों है. फिर अगर एक ही चीज सबको करनी है फिर तो भैया जो सबसे अच्छा सही करता हो सब कर लो. Why is there a competition in fashion photography whenever it comes to the work? When if everyone was to do the same thing, if there was just two things which was one could click outdoor photography and indoor photography and sell a product, then why would we just be even thinking of
Like, why something else? Why just we learn photography and understand basics of it and then we done with it? So the biggest thing which differs from everyone is the category. सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन जो आता है, yes Mr. Shain. Is there any question, sir? What happened, sir? His hand was raised. Okay, Shayan, do you have any question? You can unmute. Or else you can drop down your question or queries in the chat box. If anyone have any questions or queries, they can just raise their hands or write down in the chat box. Yes. Anyway, now continuing. So सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन जो आती है जब बात करते हैं कैटेगरी की, when बात करते हैं जॉनरा की, जब बात करते हैं फोटे, हम जब वर्ड यूज करते हैं ना फोटे फैशन में या फोटोग्राफी में या किसी भी आर्टिस्टिक एक काम में जब बात करते हैं फोटे का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन. Whenever we talk about any kind in the terms of artistic work. So Sumit is having question for you, sir. What about editing and what is the essential thing? See, there is a saying in photography: 70% happens in camera and 30% happens on computer. So unless or until you achieve that 70% in that camera, the editing won't help. You can have one of the best editing software, you can have the best editing minds, but if the photo is not good enough to edit, it won't matter. On the other hand, you could have one of the best photos, even though you don't know editing, you would still go with it. So it's always remember 70% in camera and 30% in editing. So जब भी हम बात करते हैं कैटेगरीज की, जब भी हम बात करते हैं कुछ अलग करने की, तो अलग इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले तो आ जाता है जो हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं ब्रेड और बटर फैशन फोटोग्राफी का, वो होता है तुम्हारा फैशन मार्केटिंग, कमर्शियल फोटोग्राफी. When we talk about the bread and butter of fashion photography, it is a commercial photography. Commercial photography means product photography. हम बात करते हैं कमर्शियल की बात करते हैं, उसका मतलब होता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी. सो कमर्शियल फोटोग्राफी का मतलब क्या हुआ? हम जब भी कोई फोटो देखते हैं अखबार में मोबाइल की, हम उसमें कोई मॉडल नहीं देखते, हम सिर्फ मोबाइल देखते हैं. Raghav, I'm just doing that only. I'm going around that part only. So जब भी हम बात करते हैं उसकी, तो हम जो है उसमें प्रोडक्ट देखते हैं. Whenever we see some kind of advertisement for a mobile, we don't usually see the faces or any model. What we see is just the product. So that is what we call commercial product photography. In that is also a part of fashion. Because when we talk about fashion photography, just understand this basic. Fashion photography means we are selling a fashion product or a fashion related product. इंडिया में जो सबसे पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो ही बिकता है. हम उसको बेचने के लिए जो दिखाना चाहते हैं, हम एक छोटे से कोयले के पीस को जब डायमंड की तरह दिखाना चाहते हैं, वो फोटोग्राफी है. फैशन फोटोग्राफी का मतलब होता है हमें कोई एक फैशन की चीज को बेचना, और वो क्या बेच रहे हैं वो सामने वाला क्लाइंट के ऊपर निर्भर करता है. हाउ वी सेल अ गोल्ड एज अ डायमंड टू आवर कस्टमर is photography, and what at that call a diamond is, that it depends upon the client. So that is the bread and butter of fashion photography, which commercial photography. Now there is a commercial product photography, and then there is a commercial fashion photography. Commercial product photography means whenever you are doing photography which includes only and just the products and not any faces. And when we talk about product photography, commercial fashion photography, it involves a product and a model, but nothing else. It's a white background photo shoot which Amazon, Myntra, Flipkart kind of e-commerce website does. हम जब बात करते हैं कमर्शियल फोटोग्राफी की, दो चीजें होती हैं. एक होता है कमर्शियल प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जिसमें हम प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं. और दूसरा होता है कमर्शियल फैशन फोटोग्राफी, जिसमें एक मॉडल होती है, उसके ऊपर प्रोडक्ट होता है और हम उसकी फोटो क्लिक करके उसको बेचते हैं.
Amazon, मिंत्रा जैसे भी जो आप फोटोज देखते हो वो दोनों के दोनों उसी के एग्जाम्पल है। मैं आपको अपने कुछ काम में से कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उससे आपको बेटर आइडिया लगेगा कि दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसमें जब बात करते हैं, ये कमर्शियल फैशन फोटोग्राफी है। हमारे इसमें जो है मेन प्रोडक्ट क्या है, जेबीएल के हेडफोन्स। इस लेकिन इसमें मॉडल्स भी है, इसमें सब कुछ है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है हेडफोन है। हमने हम पर लोगो लगा दिया, हमने बता दिया कि ये चीज हम ये चीज बेचना चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं। ये होता है आपका कमर्शियल प्रोडक्ट फोटोग्राफी। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट होता है, कोई और चीज नहीं होती। Whenever we talk about commercial fashion photography, there is a model include involved with whom we have a product of some sort and we have model wearing or donning that. Whenever we talk about commercial product photography, we have a product which could be either on a specialized background, which could be on a white background, which could be something like this, but it is only the product. Our main focus is selling on the product. So biggest example that we see when we talk about the product photography is on Myntra, and it is Myntra and Amazon are the two of the biggest employers or photographers when we talk about commercial fashion photographers, and then they are eager to pay you upwards of 3 to 5 lakh rupees per month if as a contract for freelance photographer if you're working with them and providing with them photos. Catch or the problem why that most of the people don't go with that kind of a work, or what most of the people avoid those kind of a work unless until you could do so, is two things. First, logistics. You need your own personal studio space with proper lighting and proper setups, which is one of the major guidelines. Second is there is a certain style of editing that is required to go through with them, and they only pay once all your photos are approved, otherwise they never pay the money. मिंत्रा और अमेजोन सबसे ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं इंडिया में फोटोग्राफर्स को। काफी स्टूडियोज, काफी बिजनेसेस होते हैं जो फोटोग्राफर उनके बिहाफ पे एम्प्लॉय करते हैं और आपको चीजें देते हैं, और वो आपको एम्प्लॉय की तरह वर्क करना पड़ता है। और आप खुद कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करना चाहते हो, 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देने तक पहले तैयार होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें जो आती है वो आती है, एक तो लॉजिस्टिक जो होती है स्टूडियो स्पेस की, प्रॉपर स्टूडियो गाइडलाइन के हिसाब से। दूसरा होता है एडिटिंग की, उनकी प्रॉपर एडिटिंग का एक तरीका होता है जो बताते हैं, जो समझाते हैं, और पैसा वो तभी देते हैं जब आपकी सारी की सारी फोटोज अप्रूव हो जाती है, वरना वो आपको पेमेंट नहीं करते एंड वो एडवांस भी पे नहीं करते कुछ। तो आपको मैं कुछ फोटोज दिखाता हूँ आपको कैसे होती हैं मिंत्रा की फोटोज। ऐसे आपने काफी लोगों ने, मेरे को लग रहा है कि सबने ही देखी होगी, क्योंकि सोशल ऑनलाइन शॉपिंग करना इस काफी आजकल आम बात है। I'm pretty much sure that most of the people who might have seen these kind of photos already on some kind of a platform. How to collaborate with them? I will be talking about the career choice and all those options and everything at the end of the session. So I will explain that at that point. So like this is a kind of photography they expect from the photographer, the employer, or the organization or the agency they employ to get them back. You are provided with the product, you are provided with a deadline, you are provided with the number of products and everything. It's your job to hire the models, it's your job to hire the stylists, the makeup artists and everything, then deliver the 700 to 800 photos in under 10 days. All ready to be uploaded, which means edited, clicked, and everything done and dusted in just under 10 days to meet their requirements. So this is two of the photography, and the reason we call them bread and butter of photography is these are the most highest paying job, and these are the most not easiest to get, but certainly if you are good enough, if you have enough contacts, it is much on the easier side of achieving as a regular means of pay. सबसे आसान नहीं होता इनको लेना, सबसे आसान नहीं होता इनको ढूंढना, बट अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं और आपका काम अच्छा है और आप एक तरह से कहीं से निकाल लेते हो, तो ये एक ऐसा होता है जो आपको हर महीने की कमाई करके देगा।
Next in fashion photography comes in fashion event photography. So when we talk about fashion event photography, which is one of my major work, which is fashion shows. So whenever we talk about fashion shows or fashion show photography, so what first of all, what is fashion show? Fashion show is basically a collection showcase done by fashion designer or fashion brands in which they show their latest collections on a ramp walk, which is worn by models in front of certain selected clients, selected customers, selected celebrities, and all fashion people and fashion photographers to showcase. And after that, those photos comes in the market through magazines, through videos or social media, which are then comes in the shops to purchase. सो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है फैशन शो फोटोग्राफी. फैशन शो फोटोग्राफी जो मेरा खुद का एक काफी लॉकडाउन लगने से पहले काफी रेगुलर काम होता था. फैशन शो फोटोग्राफी, फैशन शो क्या होता है? फैशन शो बेसिकली होता है फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं, जो बड़े डिजाइनर बड़े ब्रांड्स होते हैं, अपना कलेक्शन बनाते हैं. जब कलेक्शन आने से पहले 3 से 6 महीने पहले फैशन शोज होता है, ऑर्गेनाइज होते हैं काफी सारे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद में, जहाँ पे उनके गारमेंट दिखाए जाते हैं. वो गारमेंट बड़े बड़े मॉडल्स पहनते हैं जो गिने चुने लोगों के सामने पेश किए जाते हैं. वो गिने चुने लोग काफी बड़े बड़े नामी हस्ती हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, न्यूज के लोग हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो सकते हैं. और जो पहनते हैं कपड़े वो भी एक्ट्रेस और मॉडल्स होते हैं. काफी टाइम से आपने देखा भी होगा, काफी फोटोज वगैरह कहीं देखी होंगी कि अनन्या पांडे, ऋतिक रोशन, सबने काफी बार मॉडलिंग की है फैशन शोज में. रोहित बाल, तरुण तिलानी और मनीष मल्होत्रा जैसे नामों के लिए. तो उन जैसे उस टाइप में होता है, वो फोटोज आप क्लिक करके बाहर मार्केट में आती है मैगजीन वगैरह के थ्रू, जो आप देखते हैं और आपको पेमेंट मिलती है. अब इसमें दो तरह के काम होते हैं. पहले होता है कि आप किसी मैगजीन या किसी एजेंसी के साथ जुड़े, आप उनके साथ काम करें पहले अपने पोर्टफोलियो बनाने के बाद, और उसके बाद वो आपको पे करें आपकी फोटोज के बेसिस पे. तो कुछ उनका प्राइसिंग सेट होता है, वो आपको बता दिया जाता है कि एक फोटो को कितना देंगे, तो आप इतनी फोटो सिलेक्ट होंगी, उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है. दूसरा ऑप्शन होता है कि जो डिजाइनर वहां पे आने वाला है या फिर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप उनसे बातचीत करें, आपके पास अगर आपकी कोई टीम है अपनी, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट लें और उस उनके थ्रू वर्क करें. वो यूजुअली थोड़ा आपको ज्यादा पे करते हैं, बट वो बहुत कंपटीशन में होता है और बहुत मुश्किल से होता है कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना, क्योंकि बहुत ही क्लोज्ड मार्केट है, वो बहुत मोनोपोलाइज मार्केट है. So the two biggest things which comes in this kind of work is either you are a fashion photographer who works with the agency or a news brand. You work as an employee or you work as a freelancer. You go on the fashion show with their card. You click the photos and you are paid based upon the number of photos selected. There is a certain amount which is given. It could be anything from 2,500 to 25,000 rupees for per photo, depending upon the scale of photography and depending upon the event and everything. Second option is you can contact the agencies or the organizers or the designers who will be presenting or organizing that show. You can collab or work with them directly. They might be willing to pay you more, but the thing is you have to cover their whole thing, and you have to provide with everything that they need, which usually requires fashion shows as well as the behind the scene, which is the back home work. Which is a way to take a photo of that, which is what we have to keep in mind. See, fashion show photography is all about three things: focus, speed, eye. So let's start with the first of all with the speed. Speed is basically whenever we talk about fashion show, if you have ever seen a ramp walk, you will notice one thing, that models goes on a fast speed. So you have your camera, even though today's camera is well working aware of clicking even if the on the fastest thing alive. They can even click cheetahs and the fastest car alive. But the thing is, your main focus is not just clicking it. You have to showcase it. So you have to make sure that you adjust to the speed of the model and get the enough photos, which is you need at least 3 photos. First is a full, second is a half, and third is a close-up. Full means head to toe, which showcase the whole outfit, preferably whenever they are walking down the aisle and in the center point. Second, which is mid. Mid is when you click from the head till the waist, and last is closer, which is the head till the shoulder line. फैशन शो फोटोग्राफी में जो होता है, रैम्प के अंदर सबसे जो 3 चीजें मान्य रखी जाती है: फोकस, स्पीड और आई.
इसमें सबसे पहले बात करें स्पीड की। स्पीड क्या होती है? इवन दो हमारे कैमरा के जो काबिलियत है वो इतनी है कि चीता से लेके एक फरारी तक को कवर कर सकती है, बट हमारा काम सिर्फ क्लिक करके देना नहीं है, हमारा काम है उसको दिखाना, उसको प्रेजेंट करना, उसको प्रस्तुत करना इस ऐसे तरीके से कि सामने वाला देख के बोले हाँ भैया ये कुछ है। उसमें तीन चीजें प्रिडिक्ट की जाती है। सबसे पहले आता है फुल शॉट, सेकंड आता है मिड शॉट, थर्ड आता है क्लोजअप। फुल होता है सर से लेके पैरों तक। उसमें यूजली जब वो रैंप पे चलती है, रैंप होते से वो चल के आती है, वो बीच में एक जगह रुकती है जहां पे अपना आउटफिट दिखाती है। एक पहला फोटो होता है वहां पे। दूसरा फोटो होता है आपका क्लोजअप, सॉरी मिड शॉट। मिड शॉट होता है जब वो थोड़ा सा आगे आती हैं तो उनके सर से लेके कमर तक, जहाँ पे उनके एसेसरीज या उनके मेकअप या उनके डिटेल दिखाते हो। और लास्ट होता है क्लोजअप जिसमें उनका शक्ल दिखाते हो। सेकेंड इज फोकस। बिकॉज फैशन शो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है फैशन शो कवर करने में, वो होती है लाइटिंग। फैशन शो की लाइटिंग सबसे वाहियात होती है, क्योंकि फैशन शो की लाइटिंग आपके लिए नहीं बनाई गई, फैशन शो की लाइटिंग बनाई है उनके कपड़े दिखाने के लिए। तो अब ये लगा लीजिए जैसे आपकी शादी में डीजे वाली लाइटिंग होती है, जैसे कि ज्वेलरी स्टोर में लाइटिंग होती है, उसमें फोटो कभी क्लिक नहीं कर पाते बिकॉज उनके कलर्स बड़े गंदे होते हैं, बट आपको तब भी आपको क्लिक करनी पड़ती। तो वैसी फैशन शो की लाइटिंग होती है। तो उस टाइप की लाइटिंग में फोकस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी आपके अंधेरा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी टंगस्टन लाइट के चक्कर में कभी कभी आपकी लाइन्स आ रही है। तो आपको ये भी चीज का ध्यान रखना होता है। और दूसरा होता है फोकस में कि हमेशा आपकी फोकस आई पे रहेगा। आपका फोकस अगर आई से हट के कहीं और गया, इकलौती जगह है जहाँ पे मॉडल की आई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आई फोकस में है तो आउटफिट दिख जाएगा, आई फोकस में ही नहीं है पूरी फोटो खराब हो जाती है। तो आई का फोकस होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई का मतलब होता है डोमिनेंट आई। हर एक इंसान की एक आई डोमिनेंट होती है, इधर लेफ्ट और इधर राइट। वो आपको उसकी जरूरत ज्यादा इतनी ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सी डोमिनेंट है, मैं पहले बैठ के देखूं समझू, करने की जरूरत नहीं है। हमेशा राइट आई के लिए जाइए। So whenever we talk about focus, the biggest two problems which arise are the lighting present there. It is even worse than the DJ lighting because of the colorful lighting and tungsten lighting. Usually they use halogen or LED kind of lights, which doesn't usually help the photographers in any purpose or any way. So usually focuses and the photography comes in harm's way. The best tip which I can give is to focus for the eye. Always make sure that dominant eye is in focus. So without thinking much about what to eye to choose, just go with the right eye. Right eye is one of the set proportionate in our industry. Always go for the right sided eye. लास्ट पॉइंट आता है कि आपको दिखाना, शोकेस करना। अब आपकी फोटो क्लिक होने के कैसे होगी? स्पीड हो गई, फोकस हो गई, आगे क्या? फैशन शो की फोटो में सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम आता है फोटो क्लिक करने के बाद वो फोटो यूजेबल है कि नहीं है। इस चीजों का ध्यान रखना होता है। फैशन शो की फोटो, हर फोटो क्लिक की हुई फोटो काम की नहीं होती। अगर उस टाइम पे आपने करते हुए 50 500 300 फोटो क्लिक कर दी एक सीक्वेंस की, उसमें यूज आपकी 5 हुई तो बिकेंगी सिर्फ 5 ही, बाकी 495 फोटो बेकार है। यू कैन गो विद 500 बस क्लिक एंड at the end if only 5 are usable, the rest 495 are waste of use. There is no usage of those. It is just your shutter which is not collapsed, which is just your shutter click that is or not done, which is just unnecessary memory space which is now dead, which is not of any use. So that you have to make sure. So fashion photography, just like sports photography or wildlife photography, it needs practice, it needs time. The best way forward is to go and find smaller fashion shows, which is usually charity shows. Several charity NGOs work with fashion brands on some kind of a fashion shows, which are usually not meant for a big high scale, but rather smaller scale. Go and find them and ask them if you can voluntarily work for your own portfolio, and tell them that you will give them photos at the end of the show that they can use. सबसे आसान तरीका जो पोर्टफोलियो बनाने का, प्रैक्टिस करने का जो होता है, वो होता है कि चैरिटी शोज और छोटे फैशन शोज ढूंढो, उनसे बात करो, उनसे बोलो कि हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना है, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ या करती हूँ, मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे इंडस्ट्री को समझना है, आपको मैं सारी फोटोज दे दूंगी, क्या आप मुझे परमिशन देंगे अपने शो को कवर करने का? इससे आप पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आपके कॉन्टेक्ट भी बन सकते हैं। लास्ट
and the most major category in fashion photography as a whole is the marketing photography, or what we call high-end photography, glamour photography. So what I showed you on the Dior session, what I showed you with the Dior photo or the fashion cover photo, which is what we call high-end glamour photography. So now what is glamour photography? Glamour photography is basically showcasing the best of the best. सबसे लास्ट ऑप्शन आता है, कैटेगरी जो आती है वो आती है ग्लैमर फोटोग्राफी. अब ग्लैमर फोटोग्राफी क्या होती है? किसी प्रोडक्ट को इतना ज्यादा हाई एंड करके लग्जरी करके दिखाना कि नुक्कड़ में मिलने वाले एक 500 रुपए के कपड़े को भी हम 5 लाख का दिखा सके. Biggest thing which goes in glam photography is not even photography. Photography comes almost after the pre-production. Pre-production means first you get up and find the product. You understand the product. You understand the merit of the product. You understand the details of the product. Second is you find the concept. You understand the story behind the product. You understand what they want to focus on, what they want to conclude, what brand wants to show. And then you find a stylist. Stylist is the person who will help you get that outfit on, that will help you posing, that help you with the model on the shoot, that will help you with all the props and everything that goes in the photo. Second is the makeup artist. Makeup artist is the person who will do the makeup of the model. And lastly is the model. जब हम बात करते हैं ग्लैमर फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी सबसे बहुत बाद में आती है. उससे पहले हमारा आता है प्रोडक्शन प्लानिंग. उस प्लानिंग में सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट को लेके समझें, प्रोडक्ट की स्टोरी क्या, उसकी कहानी क्या है, प्रोडक्ट क्यों बना है, उसकी डिटेल में घुसे, उसके बारीकियों में जाएं, उसको समझें प्रोडक्ट को. अगर मैंने कोई चीज ली है, हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए कि आप उसको खुद को यूज करके देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को समझने के लिए कि ये प्रोडक्ट ऐसा है तो क्यों है. अगर ये ड्रेस ऐसे पहन सकते हैं तो क्यों पहनते हैं, इस ड्रेस में ऐसा क्या खासियत क्या है. फिर आप स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं. स्टाइलिस्ट का काम होता है कि मॉडल कैसे आउटफिट पहनेगी, उसने क्या ज्वेलरी पहनेगी, उस सारी चीजों का जितना भी मॉडल के अराउंड और फोटो में जो सब कुछ जाएगा, उसको जो प्लानिंग वगैरह करोगे, वो सारा काम होता है स्टाइलिस्ट का. उसके बाद होता है मेकअप आर्टिस्ट जो उनके मेकअप करते हैं, और उसके बाद होता है मॉडल. मॉडल के बिना ग्लैमर फोटोग्राफी नहीं है. इसमें प्रोडक्ट को नहीं दिखा सकते आप, इसमें आपको मॉडल होना जरूरी है. इसके लिए आपको मॉडल चाहिए होगी. मॉडल भी आपको ऐसे चूज करनी होगी जो आपके प्रोडक्ट को दिखा सके सबसे अच्छे तरीके से. कभी ये नहीं कि आप किसी को भी पकड़ लिया क्योंकि वो सस्ती थी या उसकी प्राइसिंग कम थी, उसके ने मुझे लगा कि अच्छी थी, मेरे फ्रेंड की दोस्त थी, मैंने ले लिया, इंस्टाग्राम पे तो अच्छी लगती थी. ऐसे नहीं. अगर कोई आउटफिट है, वो आउटफिट किस तरह की मॉडल पे अच्छा लगेगा, स्टाइलिस्ट को डिसाइड करते हैं. स्टाइलिस्ट से बात करोगे, आप डिस्कस करोगे, उस हिसाब से आप मॉडल्स को पकड़ोगे. Whenever you hire a model, you discuss with the stylist and you go with the proper structure on what that product will suit on. You cannot just find any random model and just get her to become your model. You have to properly find a model. Second is photography. Fashion photography shoots this kind goes for hours. It can take 6 and 7 or 8 hours of continuous photography. You click photos and photos and photos. You have ideas. Whenever I go to a fashion photo shoot, whenever I go for a fashion photography, whenever I have a client's project, what I do is I meet them. I meet the stylist and I meet all the people, except for the makeup artist and the models, which I usually meet on the day of photography of the shoot. I go to them, I talk with them. I'm on my iPad. I make a proper kind of an inspiration board. We select some photos, we save them. We bring the outfit. We bring the necessary jewelry or accessories. And before that, we find a location. We plan everything before doing the shoot. On the day of shoot, my mind shouldn't be going anything but the photography part. जब भी मुझे कोई क्लाइंट का काम मिलता है, जब मुझे काम करना होता है, तो मैं पहले सबसे पहले क्लाइंट से मिलता हूँ, उसके बाद स्टाइलिस्ट से मिलता हूँ. स्टाइलिस्ट से बैठ के पूरा अपना एक प्लान बनाता हूँ, गैलरी में फोटो सेव करता हूँ अपने आईपैड पे, क्लाइंट से उनको अप्रूव करवाता हूँ. उसके बाद उनको बताता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए. लोकेशन अगर कुछ है, और लोकेशन अगर ऐसी है जो पेड है, उसमें पैसे लगने वाले हैं, क्लाइंट को बताता हूँ, उनकी बुकिंग करवाता हूँ. वहाँ लोकेशन जाके पहले लोकेशन की देख के आता हूँ, इसको ब्रेकी कहते हैं. लोकेशन के देखने में उसको फाइनलाइज करके वहाँ की फोटोज निकालता हूँ, आइडिया निकालता हूँ, समझता हूँ, पूरा प्लान करता हूँ. जिस दिन शूट करने जाऊंगा, मेरा दिमाग सिर्फ शूट पे होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं.
On the day of shoot, you go for hours, sometimes even without eating your food. शूट वाले दिन कभी कभी होता है घंटे घंटे चले जाते हो, कुछ खाने को भी नहीं मिलता रात तक. क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं कि आपको भूख नहीं लगती, इसलिए नहीं मिलता, रीजन भी कि आपका टाइम ही नहीं होता. कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आपको 2 घंटे में ही सब कुछ करना पड़ेगा, या 8 घंटे तक भी कर लोगे तो निकलता नहीं. फोटो क्लिक करते हो, इस पे आती है एडिटिंग. जो पीछे इन्होंने पूछा था एडिटिंग के बारे में, यहाँ पे एडिटिंग का बहुत बड़ा काम है. एडिटिंग के अंदर उसकी फोटो क्लिक होने के बाद आपका लैपटॉप पे जाएगा, लैपटॉप में पहले आप सिलेक्ट करोगे, स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, फिर फोटो यूजेबल है, फिर आपका क्लाइंट अप्रूव करेगा. उसके बाद आप उस फोटो पे बैठ के एडिट करोगे. एडिट का मतलब क्या होता है? रो फोटो है, लाइटिंग, बैकग्राउंड, सबसे पहले कलर, सब कुछ ठीक करोगे. उसके बाद उसमें कुछ अगर ऐसा कोई एलिमेंट डिस्ट्रैक्ट कर रहा है जो आपकी आइज को, उसको साफ करोगे. उसके बाद उसमें नेसेसरी चीजें ऐड ऑन करोगे, ब्रांड का नाम, लोगो वगैरह सब कुछ डिटेल्स, और फिर आप क्लाइंट को अप्रूवल के लिए दोगे. Whenever we talk about these kind of things, it goes for hours and hours, just because we cannot. It's not because we are not hungry, but it's more because we have a time constraint, we have time limit, and we need to get it done. And before that, it is something that you doesn't feel hungry from inside. It Your mind doesn't go for that food; it goes for what we can do else. Here, as for editing is essential. What comes in editing is that first you sit on a laptop and select the photos with your stylist, then get them approved by the brand or the client. Then you edit them. First editing goes on the lighting and the color, then on the model skin, then the distracting elements and all the dust and everything. And lastly, you go with the add-ons, which is a title, which is a brand name, which is a logo, which is a additional content. And then you submit it to client. And after it's a process, if the client agrees and he's like, or she's like, yeah, it is perfect, it is done. If not, you make the changes and you it goes front and forward. So these are the three of the most major industries, sub-industries in the fashion industry, and when we talk about fashion photography. So what I will be teaching in these 7 lectures is how to achieve all three of them. Okay. We cannot be able to go on a location and do that because of the time limits and the whole process and everything. We will explain examples with the help of video, with the help of everything I can. There is some disturbance from someone's microphone, I guess. Yes, it is resolved, sir. Yeah. So Sonam is asking, can you please suggest some editing programs? So either you have 2 options. First option, if you are editing on the mobile or something, and if you want the free option, the best option which I can suggest is Snapseed. And if you are editing on laptop, there is no free option such that is good enough for free work, but the cracks are always available in the market. So you can either go with Photoshop or Lightroom. अगर आप मोबाइल पे एडिट करते हैं तो सबसे बेस्ट ऐप जो आपके लिए है, जो फ्री भी है और सबसे ज्यादा काम भी होता है, वो है स्नैपसीड, जो आपको ऐप स्टोर पे भी और iOS स्टोर पे मिल जाएगा. और अगर आप लैपटॉप पे जाते हैं, कंप्यूटर में वर्क करते हैं, तो मैं उसमें फ्री में कुछ नहीं, उसमें फ्री में ऐसा कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन आपको क्रैक वगैरह ऑनलाइन में मिल जाते हैं. कंप्यूटर वाले पे जाएंगे, कंप्यूटर मार्केट में जाएंगे, उससे बोलोगे वो डाल देगा आपको. सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आता है एडोबी लाइटरूम और एडोबी फोटोशॉप. हमारे लेक्चर्स में सबसे लास्ट लेक्चर होगा वो एडिटिंग के ऊपर ही है, जिसमें मैं दोनों सॉफ्टवेयर्स आपको इन डिटेल्स इन डेप्थ में समझाऊंगा. So now we are open to any question or answers that anyone need or wants. Yeah, Yes, guys. So, yes, sir, you were saying something? there was one question before from Raghav and a couple of other people. So when we talk about how to find the work, how to collaborate, or how to find this kind of clients, first thing is learning the craft. Second thing is preparing a portfolio, and third thing is approaching. सबसे पहला काम होता है सीखना, दूसरा होता है पोर्टफोलियो तैयार करना, और तीसरा होता है अप्रोच करना. सीखने के लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको एक हफ्ते में सब कुछ, मैं 7 क्लासेस में आपको बिल्कुल ऐसा फोटोग्राफर बना दूंगा कि आप बाहर निकलते ही सबसे पहले आप अपना कैमरा लेंगे और लाखों रुपए छापने लग जाएंगे. मेरे को ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं काम करते करते, लेकिन मैं अभी तक सीख रहा हूँ, मैं अभी तक पढ़ता हूँ, मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी तक उसमें आगे डिग्रीज कर रहा हूँ. मैं खुद
फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ले रहा हूँ, मैं मास कॉम की डिग्री कर चुका हूँ और मैं आगे आके मास्टर्स की भी प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हर रोज मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ कोई ना कुछ चीज ऐसी आती है जो मुझे अभी भी पढ़नी पड़ती है। फोटोग्राफी चेंज हो रही है, वो आगे बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, तो यू हैव टू कीप इट अप. Second is portfolio. So whenever we talk about portfolio means either your best work, which could be best 15 photos which you feel that of this category, and this doesn't mean that for any 15 photos. If you're going for fashion photography, you cannot show your photos that you clicked in a zoo or you clicked in mountains or anything. 15 best photos means your best 15 fashion photography photos of that category. If you're going for a fashion show photographer, then 15 of your best fashion show photos. If you don't have that portfolio, try and find people, help, ask people, collaborate the people, ask them if you can plan something of your own. I will explain how to do that in the future classes, and then do that part. And last is approach. Approach means whenever you find a client, whenever you find an opening, make sure to convince that client that yes, you are the best person for them. जब भी आपको काम के लिए कोई ऐसा बंदा मिले, देन आप उनके पास जाएं, उनसे बोलें कि भैया हम क्यों सबसे अच्छे बंदे हैं आपके लिए, इसलिए. Now let's answer the questions. Can you suggest what portfolio should be in our portfolio? Portfolio means your best photos. It could be anything. Whatever you feel is your best work in set category, it could be that is your portfolio. जो भी आपके सबसे बेस्ट काम है उस कैटेगरी का, वो आपका पोर्टफोलियो है. What camera you prefer? I personally use Sony cameras, but the preference remains upon what you are using or what you are comfortable with. You can go with and what your like pocket allows. Camera